So hello everyone, I wish you a very good evening. I hope आपका जो दिन है काफ़ी अच्छा जा रहा है. And in today's session हम लोग देखेंगे introduction to the internet, which is from the subject computer applications course code 165. The most expected questions जो आपके term 2 में actually आ सकते हैं. हम लोग देखेंगे objective type questions plus 2 marks questions. So I hope you have been preparing well. आपका जो revision है वो चल रहा होगा at this point of time. But before we start, please let me know in the chat if my voice is audible to you, if you're able to see the screen properly. All right, welcome Riddhi. So a quick introduction, everyone who's watching this video for the first time who do not know about me, my name is Aakash Singh. I'm a graduate from IIT Bombay. मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी डिग्री करी है फ्रॉम IIT हैदराबाद. तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपको कोई भी डाउट्स आ रहे हैं, अगर आपको स्केड्यूल चाहिए, अगर आपको नोट्स चाहिए, यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन अनअकैडमिक कम्युनिटी. सो अनअकैडमिक कम्युनिटी क्या है? आई होप यू हैव डाउनलोडेड द अनअकैडमी ऐप. इफ नॉट, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम एंड्रॉइड एंड iOS, both of them. ठीक है, आपको कैसे करना है? यू कैन जस्ट सर्च फॉर माई नेम ऑन द अनअकैडमी ऐप. ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप ऐप पे जाओगे आपको नीचे ये छोटा सा पार्ट दिखेगा एजुकेटर कम्युनिटी का. सो यू कैन गो दैट, यू कैन फॉलो मी. सो उससे क्या होगा, यू विल बी एबल टू एक्सेस ऑल द नोट्स. जितने भी मैंने नोट्स शेयर किए हैं, जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस आई हैव शेयर, यू कैन एक्सेस ऑल ऑफ दोज. एंड ऑल्सो देर इज अ टेलीग्राम चैनल विच यू कैन ज्वाइन इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस स्केड्यूल, या फिर अगर आपको कोई डाउट क्लियर करवाना है, या फिर मे बी आपको कोई ज़्यादा नोट्स चाहिए. सो आई हैव कंप्लीटेड द सिलेबस फॉर कंप्यूटर एप्लीकेशंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज वेल एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो आपको इन तीनों के लेक्चर्स जो हैं इस चैनल पे मिल जाएंगे, विच इज़ अनअकैडमी क्लास 9 एंड 10. सो इन ऑर्डर टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, वॉट यू कैन डू इज, ये जो URL आपको दिख रहा है, जस्ट आपको अपने ब्राउजर में डालना है. आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड्स व्हाट अ ब्राउजर इज. मोजिला फायरफॉक्स एज. So this session is for computer applications, Riddhi. All right. So first of all, we'll be discussing the 1 mark questions, basically objective questions. हम लोग देखने वाले कौन से हो सकते हैं. So this was asked in CBSE board exams 2011 में पूछा गया था. Exchange, what do you do with the internet? कि इंटरनेट के साथ आप क्या करते हो? Exchange information. Okay, so yes, you do exchange information. Access pictures, sounds, video clips. Yes, you do that. एंड फाइंड डाइवर्स पर्सपेक्टिव ऑन इश्यूज. सो बेसिकली आपको पूछा जा रहा है कि इंटरनेट के क्या क्या यूजेस हैं. इंफॉर्मेशन के लिए होता है, मीडिया एक्सेस करने के लिए होता है, न्यूज़ के लिए होता है. सो ऑल ऑफ दिस इज द राइट ऑप्शन. ओके, so the next one is asking you, the first network was, if you do not remember this, I think around 1969 या 1971 के बीच में ARPANET बना था, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट नेटवर्क. ठीक है, इट वाज डेवलप्ड बाय US मिलिट्री. ठीक है, सो 2 का आंसर इज ए. क्वेश्चन 3 इज आस्किंग यू, विच कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इज यूज्ड बाय द इंटरनेट. इंटरनेट के लिए सिर्फ एक प्रोटोकॉल यूज होता है, वो कौन सा होता है? इट इज TCP/IP. तो ये हम लोग देखेंगे वो प्रोटोकॉल्स वाले चैप्टर में. हम लोगों ने आई थिंक देखा था, इफ यू रिमेंबर दैट, ट्रांजैक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल एज वेल एज इंटरनेट प्रोटोकॉल. Question number 4 is asking you, in internet protocol data is organized in the form of. So if you remember, as I had explained, अगर आप for example आप WhatsApp यूज कर रहे हो and you are sending an image from मुंबई टू दिल्ली, आपको एक इमेज भेजनी है WhatsApp के थ्रू. ठीक है, आपकी इमेज इतनी बड़ी है, सो कोई भी इमेज जो है वो कंप्लीट फॉर्म में नहीं जाएगी. दिस इमेज विल बी ब्रोकन इनटू स्मॉल स्मॉल पीसेस. राइट, ये छोटे छोटे ब्लॉक्स में उनको काट दिया जाता है. सो दीज ब्लॉक्स आर नोन एज पैकेट्स. सो प्लीज रिमेंबर दिस, इट इज काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट. Sumit is asking, please explain TCP protocol. You cannot recall. Okay, Sumit. So probably in the upcoming questions, जब आपको TCP/IP के ऊपर क्वेश्चन आएगा, I will be explaining it over there. ठीक है, till that time what you can do is you can refer to your notes as well. Is that okay?
Okay, so let's see the next one. Digital information is converted into analog information by the modem act. So हम लोगों को डिजिटल इंफॉर्मेशन जो हम लोग देखते हैं इन द फॉर्म ऑफ 1011 इज कन्वर्टेड इनटू एनालॉग इंफॉर्मेशन. आप बोल सकते हो फोन लाइंस के थ्रू जो ट्रांसफर होता है. तो जब ऐसा हो रहा है तो क्या चीज होने वाली होगी? डिजिटल इंफॉर्मेशन इनटू एनालॉग इंफॉर्मेशन. इफ यू कैन ट्राई टू आंसर दैट, इट इज द डेस्टिनेशन कंप्यूटर. व्हाई? नाउ लेट्स सी कि अगर आपका इंफॉर्मेशन, आपका एक पीसी है, ठीक है, दिस इज योर पीसी एंड इट हैज अ मॉडेम. ऑलराइट, नाउ इससे आपको किसी को ईमेल भेजना है, लेट्स से. तो आपका जितना भी डिजिटल इंफॉर्मेशन है, जितना भी आपके पास मल्टीमीडिया फाइल्स है, आपको किसी और पीसी को सेंड करनी है. ठीक है, दिस इज द सेकंड पीसी. नाउ व्हेन यू वांट टू सेंड योर इंफॉर्मेशन अक्रॉस, ये जो डिजिटल इंफॉर्मेशन है, इट इज कन्वर्टेड इनटू एनालॉग इंफॉर्मेशन which is done with the help of modem. ठीक है, so destination computer, actually destination computer is not the right answer, source computer would be the right answer, क्योंकि हम लोग यहाँ वाले पार्ट पे फोकस कर रहे हैं. ठीक है. रोहित इज आस्किंग व्हाट आर एड-ऑन्स एंड प्लगइन्स. तो रोहित, क्या होता है, कभी कभी आप कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करोगे तो उसमें सारे के सारे फीचर्स नहीं होते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल क्रोम, अगर आपको क्रोम में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स लेके आना है, सो दे आर नोन एज एड-ऑन्स और प्लगइन्स. ठीक है, यू कैन डाउनलोड देम फ्रॉम द इंटरनेट. Sumit, I have shared the notes on the Unacademy community. If you can go there and find it, you will be able to see them. Riddhi is saying 5th A hoga. Can you tell me why? We are converting the digital information into analog. Analog में क्यों convert किया जाता है? ताकि आप phone lines के through send कर सको. ठीक है, तो source computer is the right answer. Kumkum, the timings are 3 p.m. for computer applications and 4:30 p.m. for IT 402, but today we started a bit late. Welcome, Pratibha. So question number 6, an organization responsible for providing internet services to customer is commonly known as. Now you can take the example of ISP is the correct answer. Internet service provider बोला जाता है उनको. तो आपको ये जो फुल फॉर्म है ये याद रखनी पड़ेगी. So looking at question number 7 now, which of the following services will not be provided by a typical internet service provider? जब आप कोई भी इंटरनेट कनेक्शन लगवाते हो यूजिंग योर ISP, ठीक है, तो आपको कौन सी चीज ISP नहीं प्रोवाइड करता है? सो बेसिकली लेट्स टेक एन एग्जांपल. आपने जियो फाइबर लगवाया, तो जियो विल प्रोवाइड यू विद मॉडेम, करेक्ट. आपको इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट भी करवाएगा एंड इट विल ऑल्सो प्रोवाइड यू विद टेक्निकल हेल्प. बट जो ईमेल एड्रेस होता है ये आपको कभी भी ISP नहीं प्रोवाइड करता, ये आपको खुद बनाना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल जीमेल, याहू एटसेट्रा. रिद्धि इज सेइंग 5th क्वेश्चन नहीं समझा, सो लेट मी ट्राई दैट अगेन. So everyone understands. So first let's label, this is PC1 and this is PC2. ठीक है, there is a modem here. Do you remember what a modem does? It converts analog signals into digital and digital into analog. तो हम लोग जो पीसी पे जो भी डेटा रखते हैं, राइट, पीसी पे आपका जितना भी डेटा है, ऑल ऑफ द डेटा इज डिजिटल, करेक्ट. एंड जब हम लोग मॉडेम के थ्रू इस डिजिटल डेटा को हम लोग एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि टेलीफोन लाइंस के थ्रू ट्रांसफर करना होता है. All right, so now I've drawn the diagram. I hope you're able to understand it now. Digital information is converted into analog information by the modem. तो कहां पर डिजिटल टू एनालॉग हो रहा है? यहां पर डिजिटल टू एनालॉग हो रहा है, बट यहां पर एनालॉग टू डिजिटल हो रहा है. So I hope you are understanding now. So this is the source computer and this is the destination computer. All right, so I hope Sumit, Riddhi, you were able to understand this. So is this visible to you?
Nick connects to the internet at home using a laptop computer with a wireless connection. ठीक है, Nick is going to change the desktop computer using a 1 Gbps Ethernet cable connection. So he is converting a wireless connection into a wired connection. So ये आपको ये notice करना है. तो क्या होगा इससे? Can anyone answer? Welcome ज्योतिर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप वायरलेस से वायर्ड पे शिफ्ट करते हो, फर्स्ट थिंग इज कि आपका जो पोर्टेबिलिटी है, जो आप इजीली शिफ्ट कर सकते हो, अब नहीं कर पाओगे. तो बेसिकली डिक्रीज पोर्टेबिलिटी हो सकता है. एंड व्हाट इज द अदर थिंग, व्हेन वी शिफ्ट फ्रॉम वायरलेस टू वायर्ड, आपकी जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि वायर से आपका जो डेटा है बहुत तेज ट्रांसमिट होता है. सो बी वुड बी द करेक्ट आंसर. ज्योतिर, डू यू हैव कंप्यूटर एप्लीकेशंस एज योर सब्जेक्ट? Alright, looking at the next question, combination of multimedia and hyperlinks is called hypermedia, email, hypertext, or none of the above. This is the correct answer. Hypertext बोला जाता है, which includes your text, audio, video, images, as well as hyperlinks. So next one, on the internet, to go to another web page through the button the user should use. So ये 2012 में पूछा गया था. जनरली क्या होता है, आपके जितने भी एग्जाम्स आते हैं, द क्वेश्चंस माइट बी रिपीटेड. उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है कि आपने जो भी क्वेश्चन देखा आपके क्वेश्चन पेपर में, इट हैज़ कम बिफोर. तो सर्च टूल्स, फाइंड एंड रिप्लेस, सर्च इंजन और हाइपरलिंक. तो हाइपरलिंक के थ्रू हम लोग एक पेज से दूसरे पेज पे जा सकते हैं. If you remember, a collection of web pages linked together in a random order is website, web server, search engine, web browser. Okay, so let's try to answer this question very carefully. We have web pages which are linked together. हम लोगों ने देखा linked together है, बट वो एक करेक्ट ऑर्डर में नहीं है, रैंडमली है. सो वेबसाइट तो नहीं हो सकता, क्योंकि वेबसाइट में एवरीथिंग इज लिंक टुगेदर बट इन अ प्रॉपर ऑर्डर. ठीक है. सर्च इंजन भी नहीं हो सकता, राइट, क्योंकि अ सर्च इंजन इज नॉट अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस. जैसे गूगल इज नॉट अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, इट ओनली डिस्प्लेज यू द वेब पेजेस. डी अ वेब ब्राउजर, इट्स जस्ट अ सॉफ्टवेयर. सो द करेक्ट आंसर इज वेब सर्वर. ये तो हम लोगों ने एलिमिनेशन टेक्निक से किया, बट वाई वेब सर्वर इज अ करेक्ट आंसर इज बिकॉज आपकी वेबसाइट में जितने भी वेब पेजेस होते हैं, दे आर ऑलवेज स्टोर्ड इन द वेब सर्वर. ठीक है, बट उनका कुछ भी ऑर्डर नहीं होता. जैसे ही आपने वेबसाइट खोली, राइट, आप यूट्यूब पे क्लिक करोगे किसी वीडियो पे, वेब सर्वर आपको नेक्स्ट वीडियो ला के देगा. दैट इज वाई इट इज क्रिएटेड इनटू अ वेबसाइट. तो वी वेब सर्वर इज द राइट आंसर. Sumit is saying, sir, please take subjective questions as well. Yes, Sumit will be taking subjective questions as well. After finishing about 25 objective questions, home page helps viewers to find out what they can find on a particular site. So home page is post page of the website, index page, about page, or none of these. So 12th A is the correct answer. Riddhi, if you read the question properly, the question was asking you that the web pages are not in the correct order. अगर correct order में होता, then it would have been a website. Which of the following is or are a popular web browser? Actually, Firefox, Safari, Navigator. If you know Firefox, if you know Safari, then all of these would be the correct answer. First and default page of the website. Yes, that's correct, Sumit. Next question is asking you, Google Chrome जो आप लोग यूज करते हो, that is an example of what? It is used to browse the internet, right? So that is why it is known as a web browser. A web page is located using a, now what we are talking about is कि web page का address. Address क्या होता है? If you remember at the start of the session I said that वो जो URL है, अगर आप अपने ब्राउजर में डालोगे, you will be able to join the Telegram group. Now what is this URL? URL stands for Uniform
resource locator. Okay. So if you have doubts, you can go ahead. All right, Riddhi, I'll be taking that doubt at the end of the session now. Looking at question number 16 in URL. So this is the URL http www.unacademy.com/index.htm. Which component identifies the path of a web page? तो ये क्या होता है? ये आपकी वेबसाइट, ठीक है. ये क्या है आपका प्रोटोकॉल, एंड दिस इज नोन एज अ पाथ. ठीक है. सो C is the correct answer. Index.htm. So I hope, Sumit, the explanation was satisfactory for the 16th question. Looking at the 17th question, Kirti, a student has written some points about web pages and URL. Now, which of the following statements are true about web pages? You cannot email a link of a web page. ऐसा तो नहीं है कि आप email में किसी web page का URL नहीं भेज सकते हो. So this is wrong. You cannot create a web page. Even this is wrong. Web pages are written in HTML. So this is correct. Web pages are viewed through browser. So इसमें से दो स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है. ठीक है. For 17th question, first part. Question number 2. Which of the following statements are true about URL? Now we are talking about uniform resource locator. So URL means uniform resource locator. Yes, this is true. You can enter URL into address bar. जैसे हम लोग क्रोम या एज में करते हैं, उसके एड्रेस बार में हम लोग डालते हैं गुड आफ्टरनून मैट 07, यूनिक नेम. एन एग्जाम्पल ऑफ URL इज v@fg.com. तो ये जो चीज है, दिस इज नॉट अ URL, दिस इज नॉट अ एड्रेस, दिस इज एन ईमेल. It is not necessary for URL to be unique. Now this is also wrong, क्योंकि हर एक जो URL है उसको यूनिक होना चाहिए. क्योंकि अगर एक URL, तो URL 1 एंड URL 2 आर एक्चुअली द सेम, तो ये आपको एक ही वेब पेज पे लेके जाएंगे. ठीक है. सो A and B आर द करेक्ट ऑप्शन है. Looking at question number 80 now. Domain names always have two or more parts separated by. So let's take an example of. तो यहाँ पर आपको कौन सा चीज दिख रही है? कॉमर्स नहीं है, पीरियड्स एंड नॉट सेमीकोलन्स. ठीक है. सो डोमेन नेम हमेशा सेपरेट होता है डॉट से, और यू कैन कॉल दैट एज फुल स्टॉप. Question number 19 is asking you, in all the computers on the internet owned and operated by education institution from form part of the, जितने भी कॉलेजेस होते हैं, जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं, उनका जो लास्ट में डोमेन एक्सटेंशन लगता है, दैट इज नॉट .com, दैट इज नॉट .in, ये सब नहीं होता है. कैन यू टेल मी विच इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज .edu. so that you can identify कि कौन सी वेबसाइट belongs to an educational institution, कौन सी एक commercial organization को belong करती है. ठीक है. So question number 19. In all computers on the internet owned and separated by education institution form part of the, I think this question has been repeated, but .edu is the correct one. Each computer connected to the internet must, okay, so this is an interesting question, be a Pentium machine, have a unique IP address, have a web browser, or have a modem connection. Okay, so let's try to answer this. ज़रूरी नहीं है कि it should be a Pentium machine. Intel का कोई दूसरा version भी हो सकता है. So this is wrong. Have a unique IP address. Yes, जो online address है that should actually be unique. Have a web browser. ज़रूरी नहीं है कि सबके पास कोई ना कोई web browser हो. And have a modem connection. आजकल वायरलेस कनेक्शन भी है. So B is the correct answer. Pentium machine. Pentium is your
microchip which is inserted inside a PC. We'll discuss about that at the end of the session. It's basically a processor. So question number 21, an IP address is a string of dash numbers separated by periods. So IP address, if you remember, can you answer? String of how many numbers? 4 numbers. आपके 4 numbers होते हैं which look like this, ठीक है, and they are always separated by periods. इन numbers के combination से आप किसी भी ऑनलाइन डिवाइस का ऑनलाइन एड्रेस क्रिएट कर सकते हो. IP addresses are converted into a binary string. Now this was asked in 2013. A binary string, alphanumeric string, hierarchy of domain names, or hexadecimal string. Now you might be confused because this is not actually in your syllabus, but what you can answer this as, binary string में आप convert नहीं करते हो, alphanumeric में भी नहीं. It's a hierarchy of domain names. Basically इसका मतलब क्या? So this is a domain, this is a domain, this is a domain, and this is your PC's address. So let's just skip this question. This won't be asked in your examinations. This is actually out of syllabus. ठीक है. 23rd question, a blog consists of images, text, links, or all of these. Now since we have studied about blogs, they are consisting of images, text, and links, all of these. So any doubts till now? Sumit, actually you have both objective plus subjective questions. Online discussion through posts about various topics is called e-discussion, news group, email, or chat. So if you try to see online discussion पूछा जा रहा है on various topics, so when we are discussing, it is known as a news group. So Rohini gave the right answer. HTML is a markup language for describing web documents. So what does HTML actually use? Pre-specified tags. Yes. User defined tags नहीं होते हैं उसमें. Tags only for linking भी नहीं है. That is only the A tag. Fixed tags defined by the language. Yes, so these both are actually right. Pre-specified tags and which are fixed by the language. A set of rules that governs data communication is, प्रोटोकॉल का मतलब ही होता है रूल्स. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP. Which of the following would you use to transfer files over the internet? फाइल्स ट्रांसफर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. Sumit is, please explain about news group. Alright Sumit, at the end of the session I'll be explaining that to you. Okay, so please do not forget to ask that doubt. FTP is the correct answer, file transfer protocol. Full form of FTP is, we just saw that, and it has also been asked in your 2018 exam. File transfer protocol होता है. D option is correct. Okay, understood. So now this is a paragraph based question. For communication of the over the internet, communicating devices must follow certain rules. Basically किसके ऊपर आने वाला है ये protocols. ठीक है. ईमेल्स के लिए हम लोग SMTP और POP यूज करते हैं. SMTP इज यूज फॉर सेंडिंग, POP इज यूज फॉर रिसीविंग. ब्राउजर्स में HTTP एंड HTTPS यूज होता है, एंड टेलनेट होता है रिमोट सर्विसेज के लिए. तो आई होप यू रिमेंबर ऑल दीज, क्योंकि सब्जेक्टिव एग्जाम ज़्यादा आने वाला है आपका, सो यू माइट बी एबल टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स. Which of the following is an internet protocol? HTTP, FTP, both or none of them? So actually हम लोगों ने just देखा, this is used for browsers and this is used for file transfer.
So C, both of these is the correct answer. Okay, so next up, SMTP protocol is, if you remember, हम लोगों ने दो चीजें देखी थी. For sending an email, SMTP is used. For receiving an email, POP is used. So used for composing an email message, used in receiving, so this is wrong. Used in sending outgoing emails by pushing the message from client to server. ठीक है, so this is the correct answer. Composing मतलब राइटिंग. SMTP आप लिखने के लिए यूज नहीं करते. यू कैन टाइप इट यूजिंग योर कीबोर्ड एंड यूजिंग योर ब्राउजर. So even this is wrong. It is used for sending outgoing emails by pushing the message from client to server. POP protocol. This is known as a post office protocol. It is used for receiving incoming emails by pulling the message from server to client. ठीक है. So even this is B. So was this explanatory? Do you have any doubts till now in SMTP or POP? Which of the following internet protocols provides secure data transmission between server and browser with the help of encryption? So you might remember S stands for secure. So कहाँ पर आ रहा है S? HTTPS में. B is the correct answer. ठीक है. So looking at the next one, full form of POP, the email protocol की बात हो रही है यहाँ पर. क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल. तो इसमें से C is the correct one. पोस्ट ऑर्डर नहीं है, पुश ऑर्डर नहीं है, पुल ओवर में नहीं है. Which of the following protocol is used for delivering data from source to the destination? Now I think Sumit, you were asking about TCP/IP, right? So please listen to this carefully. Let me explain it to you in a simple manner. Now you might have seen Indian Post, right? Indian Post मतलब पोस्ट ऑफिस होता है, उसमें आप envelopes के अंदर एड्रेस लिख के चीजें भेजते हो. Similarly on the internet क्या होता है? When you're sending the packets, right? जब हम लोग इंफॉर्मेशन के पैकेट्स भेजते हैं, ये जो आउटर कवरिंग होती है, दैट इज डन बाय टीसीपी. टीसीपी बेसिकली आपका जो भी चीज है पोस्ट कार्ड की तरह आप कंसिडर कर सकते हो. पोस्ट कार्ड होता है या फिर एनवेलप होता है. एंड इसके ऊपर जो आप एड्रेस लिखते हो, राइट, सेंडर और रिसीवर का एड्रेस होना चाहिए किसी भी मेल पे. उसके ऊपर जो एड्रेस लिखा जाता है वो लिखा जाता है आईपी से, विच इज नोन एज द इंटरनेट प्रोटोकॉल. Sumit, actually it is mandatory to learn all of them, but they are actually very easy. There are about 6 or 7 of them. सबसे पहले आप स्टार्ट करो टीसीपी आईपी से, थोड़े टाइम के लिए उसको पढ़ो, देन मूव ऑन टू HTTP एंड HTTPS, देन मूव ऑन टू FTP एंड SFTP, एंड धीरे धीरे करके यू विल बी एबल टू रिमेंबर ऑल ऑफ दोस. ठीक है, वाज दिस अंडरस्टैंडेबल? Is this understandable? Okay. So let's move on to the next one. Full form of SMTP is, it is a very simple full form which means Simple Mail Transfer Protocol. It is used for sending mails. All right. So with this, we have finished with our objective questions. Let's go ahead and look at the 2-mark questions which you can expect for your term 2. Now if you have any doubts you can go ahead and ask. अगर आपको objective questions में कुछ difficulty थी या maybe you want to ask some doubts. All right. So let's go ahead and look at a couple of theory based questions जो आपको आ सकते हैं. I'll be sharing the PDF on the Unacademy community.
एट द स्टार्ट ऑफ द सेशन आई हैड एक्सप्लेन कि आप कैसे वो कम्युनिटी फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हो. लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सेकेंड पार्ट, आई थिंक, आर यू टॉकिंग अबाउट दिस? So I hope this is understandable. Just a quick check if you're able to see the screen properly. We were discussing about this question. Why not A? Because composing का मतलब होता है लिखना. लिखने के लिए आपको कोई भी प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं होती, आपको सिर्फ Gmail पे लॉगिन करना होता है. एंड दिस डज नॉट इंक्लूड एनी SMTP प्रोटोकॉल. यूज कब होता है? जब आप सेंड बटन पे क्लिक करोगे. That is when your SMT protocol is used. Okay. All right. So let's have a look at the 2-mark questions. Mention any 2 major uses of the internet. Now these questions have very common answers. आपको कुछ भी टेक्निकल नॉलेज ज़्यादा नहीं चाहिए फ्रॉम एटलीस्ट दिस चैप्टर विच इज़ द बेसिक्स ऑफ द इंटरनेट. तो हम लोग कहाँ पर इंटरनेट को यूज़ करते हैं फॉर स्टूडेंट्स एंड एजुकेशनल पर्पसेस, और जो हम लोग अभी जस्ट कर रहे हैं विच इज़ ऑल्सो नोन एज ई लर्निंग. सेकेंड, वी कैन सेंड रिसीव द मेल ऑल ओवर द वर्ल्ड. मतलब ईमेल सेंड और रिसीव करने के लिए यूज़ किया जाता है. ओके. नेक्स्ट वन, हाउ डज द इंटरनेट हेल्प अस? इंटरनेट का क्या क्या यूज है? इट इज काइंड ऑफ रीफ्रेमिंग द सेम क्वेश्चन. इट प्रोवाइड्स यू विद इंफॉर्मेशन. आप एडवर्टाइजिंग कर सकते हो इंटरनेट के थ्रू. बहुत ज्यादा एड्स आप देखते होंगे ऑन यूट्यूब एज वेल. यू कैन कम्युनिकेट विद पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड. एंड द लास्ट थिंग विच यू कैन एक्चुअली मेंशन इज इट ऑल्सो हेल्प्स इन सेविंग पेपर. क्योंकि हम लोग जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं हम लोग ईमेल कर सकते हैं, हम लोग ऑनलाइन देख सकते हैं यूजिंग पीडीएफ्स. आपके जितने भी नोट्स होते हैं, राइट, करेंटली हम लोग के जितने भी नोट्स हैं सब पीडीएफ फॉर्मेट में है, करेक्ट. तो हम लोगों को प्रिंट आउट लेने की जरूरत नहीं होती है. रोहिणी इज आस्किंग सर फॉर विच चैप्टर शुड वी गिव मोर टाइम. आई थिंक रोहिणी यू शुड फोकस मोर ऑन CSS, HTML एंड प्रोटोकॉल. इनमें से सिंस HTML काफी इजी है, व्हाट यू हैव टू फोकस ऑन इज CSS एज वेल एज प्रोटोकॉल. क्वेश्चन नंबर 3, विच राइट 3 डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग द इंटरनेट. ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट डिसएडवांटेजेस. हर चीज जिसका एडवांटेज होता है उसका डिसएडवांटेज भी जनरली होता ही है. सो साइबर फ्रॉड्स हो सकते हैं आपके पास, राइट. ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं, आपका कोई डेबिट कार्ड का किसी ने नंबर चोरी कर लिया एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स. इंफॉर्मेशन का मिसयूज हो सकता है विच इज प्रेजेंट ऑन द इंटरनेट. सम क्रिमिनल्स माइट यूज सम इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर वायरस सर्कुलेशन. तो ये तीनों चीजें हो सकती हैं. It is used for purpose of transaction and e-commerce, correct? Share information from one end to another. Exactly, Sumit. So you're giving the right answer. So whatever answers I'm mentioning over here, they are not at all the complete answers. ऐसा नहीं है कि यही correct answer है. You can also write some answers which are in your own words. ठीक है? Let's discuss what a modem is. Yes, Sumit, that answer is exactly right. ठीक है, मॉडम का मतलब होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर. एज आई हैड एक्सप्लेन्ड इन द प्रीवियस क्वेश्चन जहां पर हम लोगों ने देखा था, डिजिटल इंफॉर्मेशन कन्वर्ट होती है एनालॉग इंफॉर्मेशन में. दिस इज नोन एज मॉड्यूलेशन एंड वाइस वर्सा. तो जिस डिवाइस में ये सब कन्वर्जन होता है दैट इज नोन एज अ मॉडम. ठीक है. एनालॉग जो ट्रांसमिशन होता है दैट इज done over the telephone lines. All right, I hope this was understood. This is an important question. आपको 2006 में पूछा गया था ये. Sumit, also not only digital to analog but also vice versa. Define home page. Right, 2 advantages of home page. Now ये MCQ में भी पूछा गया था क्वेश्चन. It is actually the first page of the website. क्या होता है? फर्स्ट पेज यूज करने से पता चल जाता है लोगों को कि आपके वेबसाइट पे क्या क्या चीजें अवेलेबल है, राइट. आप कुछ चीजें पब्लिसिटी आप मार्केट भी कर सकते हो. इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन मार्केटिंग स्लैश. आप मेंशन कर सकते हो
व्यूअर्स कैन सी कि आपकी वेबसाइट में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं. यू कैन ऑल्सो लुक एट द इंडेक्स ऑन द होम पेज. Yes, Sahil, you have given the correct explanation. Many organizations use both the internet and intranet. ठीक है, इन दोनों के बीच में एक बेसिक डिफरेंस होता है. सो इफ यू गेट कंफ्यूज्ड कि ये सब क्या चीज़ है, so let's take an example of a school. नाउ काफ़ी सारे स्कूल्स में होता है कि कुछ हाउसेज होते हैं, हो सकता है दयानंद गांधी हाउस एट्सेट्रा, या फिर काफ़ी स्कूल्स में होता है कि देर इज़ रेड हाउस, देर इज़ ब्लू हाउस, देर इज़ येलो हाउस, राइट. सो ये जो हाउसेज होते हैं, कभी कभी इनके बीच में कंपटीशन भी होता है, फिर रिमेंबर. तो दीज काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन्स आर नोन एज इंट्रा स्कूल कॉम्पिटिशन, क्योंकि ये स्कूल के अंदर ही होते हैं. एंड ऑल्सो देर आर अदर काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन्स जो होते हैं स्कूल्स के बीच में, जैसे जैसे स्कूल 1 एंड दिस इज स्कूल 2. नाउ इन दोनों के बीच में जो कॉम्पिटिशन होगा, दिस विल बी नोन एज इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन. ठीक है, सो उससे ही इंटरनेट इंटरनेट बना. इंटरनेट का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क, क्योंकि बहुत जगह पे फैला होता है. वेर एज लोकल एरिया नेटवर्क इज ओनली इनसाइड, फॉर एग्जाम्पल अ बिल्डिंग. ठीक है. साहिल कुमार इज आस्किंग द डिफरेंस बिटवीन होम पेज एंड लैंडिंग पेज. कभी कभी आप किसी वेबसाइट को विजिट करते हो, तो विजिट करने से पहले आपको वेबसाइट पे पूछा जाता है चूज योर लैंग्वेज, मे बी इंग्लिश, मे बी रशियन, मे बी चाइनीज. सो दैट इज नोन एज द लैंडिंग पेज. एंड जैसे ही आप किसी भी लैंग्वेज पे क्लिक करोगे, आपको फर्स्ट पेज जो दिखेगा दैट विल बी नोन एज होम पेज. यस, सो these are the points which you can write. इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है, वेराज इंटरनेट पे आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फाइंड नहीं कर पाओगे. फॉर एग्जाम्पल, आपका जो स्कूल का लैन होगा, स्कूल का जो इंटरनेट होगा, उसमें जनरली आपके सिर्फ मार्क्स स्टोर होंगे, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी, टीचर इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी, एट्सेट्रा. इंटरनेट इज नॉट सेफ. वाई? बिकॉज millions and billions of devices are connected with each other. You can encounter hackers over there. Whereas internet is actually kind of safe, क्योंकि बहुत ही छोटे एरिया में होता है वो, एंड उसमें फायरवॉल भी अच्छा लगा होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुमित इज आस्किंग. तो सुमित, एज आई एक्सप्लेन कि इंटरनेट इज नॉट अ सेफ प्लेस बिकॉज मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड ऑन द इंटरनेट. ठीक है, इट इज नॉट एक्चुअली ए क्लोज स्पेस. आप कोई भी चीज डाउनलोड कर सकते हो जिसमें वायरस निकल सकता है, बट इंटरनेट अगर आप देखोगे, फॉर एग्जाम्पल देर आर वेरियस बैंक्स विच हैव इंटरनेट, नाउ वेरियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विच हैव इंटरनेट. सो यहाँ पर आपको जनरली वायरस नहीं मिलेंगे. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन IP address and give its characteristics. ठीक है, सो आप अगर आपको ये आंसर करना है क्वेश्चन, व्हाट यू कैन डू इज जस्ट रिमेंबर दिस डायग्राम. या फिर आपने शायद देखा भी होगा IP एड्रेस. ठीक है, ये जो ब्रैकेट्स हैं, इसके अंदर यू कैन पुट एनी नंबर फ्रॉम 0 to 255. ठीक है, इफ यू ड्रॉ दिस डायग्राम देन यू विल बी एबल टू आंसर इट करेक्टली. It consists of 4 numbers which vary from 0 to 255, right? 1, 2, 3 and 4, and which are separated by these dots. ठीक है. It is used for international addressing of devices. ठीक है, that's why they are actually unique. किसी भी दो devices का same IP address नहीं हो सकता, and IP addresses are global. Now for example, अगर आपने कोई भी नंबर देखा like this, ठीक है, ये जो नंबर है ये किसी भी और डिवाइस का सेम नहीं हो सकता ऑल ओवर द वर्ल्ड. राइट, एंड जस्ट बाय लुकिंग एट दिस आप चेक कर सकते हो कि ये कौन सी कंट्री का है, कौन से ISP का है, कौन से स्टेट का है, एंड वहां पर कौन सी सिटी में है. IP address is the unique address of any device, not only computers but also your mobile phones, your iPads, every device which is connected to the internet. All right, so let's have a look at the next question. How do you differentiate between a web address and an email address? So there is only one basic difference, is the @ sign. आपके email address में
there will be always an @ sign, for example like this. ठीक है, so this is the basic definition. Discuss the role of web servers and web clients briefly. All right, so web server क्या करता है? It provides you with all the HTML pages or the websites. Basically it stores. ठीक है, whereas a web client क्या करता है? जनरली हम लोग वेब क्लाइंट्स यूज नहीं करते हैं, पहले ही काफी करते थे, बट फॉर एन एग्जांपल यू कैन से यूट्यूब का जो इंटरफेस है, और यू कैन कॉल इट एज youtube.com, राइट? तो ये जो इंटरफेस है, आप इसके थ्रू वेब सर्वर से कोई भी वेब पेज एक्सेस कर सकते हो जो यूट्यूब सर्वर का है. Alright, so I hope you were able to understand the difference between web server. It actually stores, and web client actually provides. It has a user interface. No, he's saying computer है पर मैं अभी तक कुछ नहीं पढ़ी हूँ. Alright, so it's completely fine. आप क्या कर सकते हो, इस चैनल पे which is Unacademy class 9 and 10 प्लेलिस्ट बनी हुई है आपके कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स कोड 165 की. आप अगर वो प्लेलिस्ट देखोगे, वहां पर सारे लेक्चर्स मिलेंगे आपको. आप लेक्चर नोट्स डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड आपको जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है वो भी मिल जाएंगे. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ HTTP? ऑब्वियसली इट इज अ प्रोटोकॉल. इट स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ठीक है, आप मल्टीमीडिया फाइल्स एक्सेस कर सकते हो, आप लिंक्स एक्सेस कर सकते हो इसके थ्रू. Sumit is saying, have you taken internet services and mobile technologies chapter before? Because tomorrow is my exam. All right, Sumit, yes, I have taken all those sessions, but for that I think you'll have to scroll for the October sessions. I think October में session हुआ था networking के ऊपर. What you can do is you can search for this term. अगर आप YouTube पे ये सर्च करोगे, आपके पास वीडियो आ जाएगी उसकी, जहां पर हम लोगों ने वो चीजें डिस्कस करी हुई हैं. ऑलराइट नुही, आई होप टू सी यू इन द अपकमिंग सेशन जब भी हम लोग रिवीजन करेंगे. नाउ व्हाट इज डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ऑल्सो नोन एज DSL? तो बेसिकली ये बहुत सिंपल चीज है. हम लोग जब ब्रॉडबैंड कनेक्शन यूज करते थे, नाउ इट इज क्वाइट आउटडेटेड, अभी हम लोग ये सब नहीं यूज करते. तो जब आपका ब्रॉडबैंड कनेक्शन था, तब हम लोग कॉपर वायर्स के थ्रू इंटरनेट एक्सेस कर सकते थे, एंड उसके लिए मॉडेम यूज होता था. दैट इज एक्चुअली नोन एज DSL. ठीक है, जनरली हम लोग ब्रॉडबैंड को ही DSL कंसिडर करते हैं. डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन के लिए आपको क्या चीजें चाहिए? यू नीड अ मॉडेम. इट इज वेरी नेसेसरी टू कन्वर्ट एनालॉग इनटू डिजिटल एंड डिजिटल इनटू एनालॉग. ऑलराइट, what are the types of URL? Okay, so since this is a very big question, I will try to give you an example like this. अगर आपने कोई गेम डाउनलोड करी है, फॉर एग्जाम्पल GTA.exe, राइट, एंड इट इज बेसिकली ऑन योर डेस्कटॉप, राइट. आपने इसका फुल एड्रेस नहीं लिखा है, आपको सिर्फ पता है कि डेस्कटॉप पे आपका आइकन है GTA.exe, एंड जैसे ही क्लिक करोगे आपकी गेम स्टार्ट होगी. दिस काइंड ऑफ एन एड्रेस इज नोन एज अ रिलेटिव एड्रेस. क्योंकि हम लोग को GTA का एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है. इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट लोकेशन, द एब्सोल्यूट URL, दैट विल बी C drive, your program files, I think Rockstar Games, then वहां पर आपको लिखा होगा GTA.exe. Now since this is the full address of the original file, this is known as the absolute address. Exact location आपको पता चलती है, whereas this is just your relative address.
It is also known as relative URL. All right, so I hope this was understandable. You can have a look at this answer when I share the PDF in the Unacademy community. Write the web extensions to given to the following websites of the following types of organizations. Okay, so let's just quickly try to answer. Educational का हमेशा होता है .edu. गवर्नमेंट जैसे हम लोगों ने देखा है आधार कार्ड या फिर आपका कोविन पोर्टल .gov. नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन .net and commercial का .com. Now since why I did this very fast is because you don't have to look at anything. First 3 letters अगर आप देखोगे you will be able to answer. Outdated चीज़ें पढ़ के क्या फ़ायदा? So Riddhi, that's a very good question, but I think we have to study everything. क्योंकि अभी आप जो केमिस्ट्री और जो फिजिक्स पढ़ रहे हो दैट इज ऑलरेडी आउटडेटेड जितना भी आप स्कूल में पढ़ रहे हो, बट all those basics are needed if you want to improve upon your knowledge. Okay, distinguish between FTP and telnet. Okay, so first of all उसका हम लोग फुल फॉर्म लिख सकते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग द फाइल्स उसके लिए फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज होता है. whereas telnet stands for टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क. यहाँ पर लिखना था रिमोट. हम लोग रिमोटली कनेक्ट कर सकते हैं दूसरे पीसीज के थ्रू. गुड इवनिंग, वेलकम. ओके, so looking at the 15th question, Mr. Lal owns a factory which manufactures automobile spare parts. Now we have to tell him about web page and also give him an advantage कि वो web page use करके क्या कर सकते हैं. तो first of all the definition. वेब पेज का डेफिनेशन होता है इट कैन कंटेन इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो एंड हाइपरलिंक्स. ठीक है, सो ये हम लोगों ने डेफिनेशन बता दिया. एंड एडवांटेज क्या होगा, उनके क्लाइंट्स को इंफॉर्मेशन मिल जाएगी बहुत इजीली. कॉल करके उनको बात नहीं करनी पड़ेगी. दे कैन डायरेक्टली गो टू द वेबसाइट एंड लुक एट ऑल द इंफॉर्मेशन. ऑल्सो जो ऑर्डर्स हैं, Mr. Lal can receive orders online through the internet. So this is the advantage. Vijaya is asking which chapter is this? This chapter is known as Basics of Internet from your unit networking of your subject computer applications course 165. ठीक है. All right, Sumit. So if you are on the Telegram group, I will be sharing the link soon with you. Or just give me a moment. I can share that with you now. So give me a moment. All right, I'll be sharing the playlist with you, Sumit. I'm just posting it right now in the chat. So you can refer to this playlist. ये एक पुरानी प्लेलिस्ट है जहां पर नेटवर्किंग यूनिट दूसरे वे में कवर किया गया था. यू कैन रेफर टू दैट, जहां पर हम लोग ने कंप्लीट सिलेबस कवर किया हुआ है. गुड इवनिंग परी. All right, so let's look at the next question now. What is www? जैसे हम लोगों ने ये वर्ड सुना, what you have to write is, it is the World Wide Web and it is a collection of web pages. आपको सिर्फ इतना लिखना है and you will be getting full marks. ठीक है, you can also write it something like this. It is a system of internet servers which support hypertext and multimedia. Okay, so this was asked in 2018.
A simple definition would be this, but अगर आपको और improve करना है अपने answers को, you can write it like this. What do you understand by a remote login? Basically आप login कर रहे हो, but आप जिस PC पे login कर रहे हो वो आपके सामने नहीं है. It is present somewhere very far. That is why it is known as remote login. ठीक है? A user can log in into the remote site. For example, अगर आप घर पे हो and आपको किसी स्कूल के PC में login करना है, you can do that using telecommunication network. ठीक है? Sanyam is saying what is the difference between server and web server? So Sanyam, server का मतलब होता है it stores the data. Now you can also create a server from your hard drive or maybe a pen drive. ठीक है? This will be just known as a server. But आप जब ये हार्ड ड्राइव या फिर पेन ड्राइव को इंटरनेट के थ्रू लिंक कर दोगे, हम लोग उस चीज को बोलते हैं वेब सर्वर. जनरली वेब सर्वर्स जो डेटा स्टोर करते हैं, दे आर ऑलवेज रिलेटेड टू अ वेबसाइट. तो सुमित, please refer to the playlist. I think the names have changed over there, but a complete session on networking was done. IT का सेशन कब होगा कनक? At 6 PM we have the IT session जहां पर हम लोग DBMS कवर करेंगे. All right. What is the full form of URL? Or what is the URL? It is Uniform Resource Locator and it is the address of any website on the internet. Write a short note on HTML. Since हम लोग HTML unit पे बहुत पढ़ चुके हैं, you can write the full form. Hypertext markup language and it is used to create websites, create or design websites. ठीक है? Can we use URL to access a web page? Yes, you can use the URL to access the web page. I'll be sharing the PDF with you. Now this is the difference between a web client and a web server. It is an application that communicates with the web server using HTTP protocol, whereas web server just stores. ठीक है, हम लोगों ने just देखा था उसका explanation. Define internet and write its two uses in our daily life. So actually this is repeated. हम लोगों ने पहले ही define किया था internet को, and I think Sumit had answered using this e-commerce and social networking भी आप बोल सकते हो. So with this we have actually completed our short answer questions, right? If you have any doubts you can go ahead and ask. I'll have my next session at 6 PM. So you can connect with me on Unacademy community. The way to do that is you just have to download the Unacademy app. Just go to the educator community. You'll be finding the notes over there. कल एग्जाम है, कुछ important points to learn and tips. Vijaya, what you can do is you can go to the community and find the notes there. All right, so with this we have ended the session. Now if you're in the class 9th or in the class 10th, you can enroll for batches which are available on the Unacademy app. अगर आपको कुछ doubts आ रहा है related to subscriptions or the latest offers, you can call on this number. Unacademy has two types of subscriptions. एक होता है Iconic और एक होता है Plus. Iconic में आपको extra features मिलते हैं जैसे mentor and test analysis. The offer currently is कि अगर आप 3 महीने का subscription लोगे, you'll be getting 1 month free of cost. And अगर आप 12 months का subscription लोगे, you'll be getting 2 months free. Right? Unacademy subscription costs you 1125 rupees per month if you use the code ASK01. And similarly for Iconic it will cost you 2100 क्योंकि extra features है using the code ASK01. 3 special classes होती हैं on the Unacademy app. You can use the code ASK01 to unlock. And this was it for today's session. I'll be seeing you in the next one. Till then, keep tracking. Bye bye.